Students, good evening, students. Good evening to all. Just give me 2 minutes. Let me assure you that there are no problem as such for this one. Uh, Sir, is there a problem with the voice and the video quality or anything as such? UD, sir. No, sir. All good, sir. And All good? we are live, sir. Yes, sir. Yes. Okay. So I welcome you all for IQRA IAS Mains Test Series 2023. And today we are going to discuss the test number 2. That is basically the Indian polity test, and I will be discussing that test. So far, what I have seen some of the good performance in the uh, papers by some students, and I'm seeing some average performance by some students. I can understand totally once you get the grip of the subject, then you are comfortable to write the paper. I can totally understand. I have a one request with all the students who are writing the mains or who are our mains test series students. I'll request you, you should write a test once you have a basic understanding of the subject or the topic that you're going to give the test. That is one thing. You should. Suppose you're prepared with history and the history paper is not there. So what you can do when the paper comes, or you have prepared with something else, or you're not prepared with the subject. Okay? So do not attempt unless you are not prepared with a significant level. एक कुछ level तक के आप अगर prepare नहीं हो, so do not attempt the paper. Okay? Don't worry. Your this one, the validity of the paper for the test before prelims will remain as it is till your prelims. So before the prelims, you can attempt the test anytime you like. Okay, that is the flexibility that we are actually providing at IQRA. Initially, there was a time bound that once you are having this, initiated your, we initiated the program. We are given the 7. Wait, we can. I'll just show you the. We can't. So 1 minute, I'll show you the website as it is. That will be better for you people. 1 minute. So this is our website. Okay, IQRA is. So you can see we have also launched current affair program and the prelims test series also. So you can join and you can get the benefit out of it. Along with that, if you see, there is PSIR optional also, and I'm taking, me and Sanjay sir is taking the PSIR optional. Along with that, if you go with the mains test series for 2023, initially we have provided the 7-day, the time limit for every test that initially. Suppose you're having a test on 30th of November, today there is a test. And the validity of that test will be for 7 days, the coming 7 days. Okay. But that is not the case now. We have extended that. You can write the test on your flexibility, but there is only one condition so far is you should complete your prelims test before prelims and you should complete all the mains test before mains examination. That is the only condition right now we are having with you people. Okay. So please complete your paper before prelims, all the paper that we have, like how many paper we have before prelims? We have around 25 paper before prelims. Okay. So you should complete all the 25 paper before prelims, 23 papers, and
the 12 paper that is after prelims, you should complete it after prelims. Okay. So that was, if you see, you can see there is a next test maximum 7 days evaluation that we have able to complete, and the validity that is there for 7 days, that we have now removed that validity part. So please write your paper when you have a little of a knowledge of that topic. If you read that topic to a certain extent, then you attempt the paper. Not necessarily just attempt all the paper, all the question, all the 20 question, but you can attempt to a certain extent how much you want to attempt. So without wasting further time, I would like to move on to our discussion for the prelims mains test 2, the question discussion. Okay. So I think it is visible to all. Sir, is it visible, right? The screen is visible to all? Yes, sir. Okay. Now you see, this is a polity test. Okay? This is a polity test. And if you remember correctly, this is the fundamental level of polity. The entire 16 tests that we initially take in, or you can say the 12 tests that we initially taking, that is the fundamental. If you assess the question, the way we have prepared the question. Now, if you assess that part, what you can say is, thank you very much, sir, for giving this video to me. Really needed this video. Okay. So I can see myself properly and I can explain it. So we have kept the question at the very basic level, very, very basic level. And if you go with our the model answer, we have given a very precise model answer, very precise, to the point. No extra jargon, no extra readings is provided to you. Okay. That we actually have done. Okay. So this polity test is very fundamental. I don't think, except 2 or 3 questions, you need a bit of an analysis to attempt this paper. Suppose, for example, if I take question number 1, what do you mean by democracy? Okay. What do you mean by democracy? Highlight the feature of Indian polity that make it democratic country. Now, in this, you have to just see the question. It's a very basic question, very basic. What does it say? What do you mean by democracy? I have to, I guess, can I change the color of the pen? Yes. No, I cannot. Anyways, what do you mean by the democracy? So I guess if I write something, is it visible to all? Is it visible? If it is not visible, let me know. Okay. One minute. Just give me a minute. There are certain problems. Okay, sorry. So if you see the question number 1, what do you mean by democracy? Simple. See, it's a very straightforward. So you can use anybody's quote, or you can simply write your own understanding definition. Yes. What do you understand by democracy? So it's generally one of the most accepted definitions so far is Lincoln's definition. Whose definition so far we have accepted as such, that you can say we have accepted the Lincoln definition so far. It is the most appropriate definition for democracy. You can use NCRT, basic NCRT definition. There is no problem with that. No issue. You can use it. Now, in the next part, the basic, even if you're using the definition of something which is written in the NCRT, that is well and good. But for all the major things, there is no definition. Majority of the concept does not provide
in majority of the concept, NCERT does not provide a definition as such, right? So for that reason, whenever you are browsing the internet also, browse the internet, but do not go for the technicality in the definition. So that the examiner read and he think what he has written, what the student has written, for that matter, right? So you should not be doing that also. So it should be very, very lucid, very simple. One of the major is, we can say, the Lincoln definition is so far accepted. Okay? Now, this next part of the question, there is two questions within. Highlight the feature of Indian polity that make it a democracy. There are various features which make Indian, you can say, Indian political system or Indian setup as a democratic setup. Like I have given in the model answer, popular sovereignty concept, free fair election, okay, representative democracy is there, then right to vote is there, freedom of speech and expression is there, republicanism is there, okay, independence of judiciary is there, gram sabha is there, okay. There are many things there are there, that is there, that we can say that we consider the feature of democracy. Now considering this, we have to write in 150 words, okay, 150 words, and we have to write for the 10 marks. So if you see this part of the question, it can easily get, approximately you will write 15 or 20 words at the max, whichever definition you use. So you're left with what? You're left with 120. Now at least write in the feature, at least write 7 features. And every feature, if you're taking 15 or 10 words, then it's easy. So better write 5 in between to 5 to 7 features that you can easily write. And in one feature, you are able to write 15, 20 questions, or 15, 20 words. Then in 5 to 7 features, you will complete. In 5 features, you will complete 75 words. And in the 7 feature, you will complete 105 words. You're left with 120 or 130 words that you can use for the conclusion. And the another part, you might want to just provide a little hint of criticism, a smaller hint of criticism, right? A smaller hint of criticism, although that is not directly asked in the question, but you can give and you can move ahead. Like I always says to my student, please provide certain kind of a hint in your, okay. So you can provide 2 criticism very briefly of 10 words. That will go to 120 words, and this 20, and this either 75 or 105 will make your answer to 150. Generally, I have seen the student has written 10 features. Why? Why you want to write 10 features? That is not a demand of the question. That is not the way a bureaucrat writes. That is not the way that you should be behave in the UPSC students. That is very different. Right? This was about the first question. How will you conclude in this one? In this question, it's very simple for a conclusion. India is a democratic country. It is actually world's largest democracy. Okay? But in today's, there is a deterioration in the quality of democracy that need an urgent addressal. That need an urgent addressal, or urgent course correction is needed in that particular area. Okay? Around the world and in India, there is a deterioration in the quality of democracy right now. And we have to assess, we have to overcome that problem to make the democracy more robust, more functional. Simply you can write this conclusion and you can come out from this. This can be called as a good answer. Okay. So this was one. Why I have elaborately discussed the first question. There is a reason to understand. Now in the entire question till question number 18, 17 in fact, you have a very direct question. There is no analysis as such required. Okay. Like take an example of second question. What is it? It's talking about Government of India Act 1935. It's sometimes referred as a framework of Constitution of India. Yes, it does. Yes, it does. It is referred as a framework because the majority portion of the Indian Constitution has taken from Government of India Act 1935. You can cite some of the features of Indian Constitution
features of Indian Constitution, which is inspired by 1935, like division of power list, 7th schedule, federalism, parliamentary system, right? Residuary power, position of governor, bicameralism. So we have taken approximately 320 sections, that is from the, even judiciary we have taken, the setup of judiciary we have taken from the 1935. Even the provision of Union Public Service Commission, State Public Service Commission, and the Federal Public Service Commission, we have taken from the democracy. 35. So you can write it down. Then you can, if you want, although it is not required in this question, you can write if you want certain, that is very briefly the criticism. Somewhere it is said that it is considered as a carbon copy of 1935 Act. The 2.5 years was wasted by the Constitution Assembly if they want to give this particular act as a Constitution of India. But then in conclusion, you can say that criticism you can write. But in conclusion, what you can say that Ambedkar, do not quote Ambedkar, but you can simply write the, generally don't quote anybody in the paper. You can quote Gandhi, you can quote Ambedkar, you can quote Nehru, okay? Right? You can quote, but not always. Unless you do not get anything to write, then quote it if you want to complete the words. Or extensively, you can use quote in your GS paper 4. GS paper 4, you can refer the thinkers, you can refer the important personalities associated with the subject and with the topic or with the concept. Okay, suppose you're talking about the constitutional morality, you can discuss about the Ambedkar. He has given the concept of constitutional morality. That you can do. Okay. And eventually you can write that, yes, Ambedkar has said there is an acquisition of drafting constitution, or that it is being plagiarized, but that is not the truth. Okay. What we have seen that, why we have taken the majority portion of the constitution of Government of India in 1930, because we want to maintain the continuity, and there was a familiarity with the political and the administrative system of that period. So we have taken that. We do not want to make any fundamental radical change in the new constitution so that it can get, the constitution itself get crippled or die over a time. Or we get the need to change the constitution. That is the beauty. And we have taken 1935 constitution, majority part. The practice that is in followed for the last 40 years, we have taken that and we have included in our constitution. That is the result after 75 or 70 years of constitutional country, India. We still don't require any kind of a new constitution, as a need for the new constitution. America, what happened? In America, there was no system at all. They have taken radical shift from all the practices that is followed in the Britain. And they have taken that. And over a time, they practice that radical. Now, if they want to shift it, that will be a very major difficulty. That I can say. Right? Okay. So this is what you can conclude it in. Third question, one of the very important question and very important topic. Now, this question number 2 and question number 3 is an important topic. You should be marking it as an important. So basic structure of the constitution. What does it say? What do you understand by the basic structure? Simply write the definition. You have the definition with you. Okay? There is no actual definition provided by the Supreme Court, but there are many definitions provided by the okay? Provided by many scholars. They have written the definition. Lakshmikant mein likha hua hai definition, you can write. Now, second part of the question says, just we have to discuss the evolution of doctrine of basic structure. Evolution. Doctrine of basic structure. And what is the evolution? We have to identify all the 4 preceding judgments that is being provided by the Supreme Court in the evolution. First case is Sankri Prasad case in 1951 that you have to mention. Then second case of 1965, Sajjan Singh case. Sajjan Singh case, you have to mention this also 1965.
Then Golaknath case, sorry, 1965. Goraknath case, 1967. And then eventually 1973, Keshananda. In this is the preceding. And simply you conclude. In conclusion, you can say there are various important judgment that has been passed to strengthen the constitutional values as such, or make it more practical, that we have done. Right? Getting it? So this is the only thing that is required in this answer. People have written numerous things in the answer. Right? So do not do that. Now let's move to the next question. Question number 4 says, what are the features of 1 minute? Okay. So question number 4, what are the features of Indian Constitution that make it federal? What are the features of Indian Constitution that makes it federal? So we have to talk specifically. We have to talk specifically. We have to talk about the features with respect to the Indian federalism. Now, beginning this answer, you need to first write what do you mean by federalism. Okay. Just provide the definition to this concept. Definition to this concept. That is important. Then in that word you will write that what are the features in Indian Constitution that make it federal. So Indian Constitution में क्या-क्या features हैं जो उसको federal बनाते हैं. ठीक है? And do you agree that Indian federalism is tilted toward the center? Now this is the another part of the question. So half of the question will be this part. What are the features that makes Indian federalism? So you can say division of power है, ठीक है? Division of power, state election है, ठीक है? Existence of state election, position of governor है, ठीक है? तो ये सारे पावर क्या है? ये सारे पावर से क्या बनाते हैं? फेडरल बनाते हैं. इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, ठीक है? फिर उसके बाद में इंडिपेंडेंट जुडिशरी, am I audible? Yes. And second, directly you have to address that. Do you agree with? Well, your agreement, your view does not matter in the main space. You do not have any view as such. Your view is zero. Okay, honestly speaking, your view is zero. Generally, what the others or the scholars or the prominent person says about this, that is the agreement. Okay. Yes, it is tilted towards the federalism. Don't write yes. First, provide the evidence that, and in the conclusion, you should write that how we can say that it is federal. It is toward Indian federalism is tilted towards the federalism. So first, in the just before the concluding para, you will provide the reason, the argument that is related to this. Okay. Got my point? Okay. So in that you can write many things that is tilted towards the federalism or tilted towards the center. Okay, सबसे important is the most important part is the Article 2 and 3, organization and the reorganization of the state. Okay. The state is not permanent. The existence of state is not permanent in the Article 2 and 3. Then you can say there is a list. State list is more towards the non-revenue sources and its expenditure part. Center more towards revenue. Okay. Then apart from this, you can also write the emergency provision. That is very important. Emergency provision, that is very important in this context. Getting that is also there. So you can, in this way, you can write 3 or 4
question. In this way, you can write 3 or 4 questions. Okay. Now, eventually, we will conclude, like I have said. Thus, we can say that thus Indian Constitution, although apprehensive to the center increasing the role in the recent year, we can say the center is tilted, or the Constitution is tilted. Indian federalism is tilted towards the center. Okay? But it does provide the due. It does provide the necessary federal autonomy in this case. Or we can say generally, if you want to write certain criticism also, you know what to, but I don't think so. Here the scope will be provided to you write the criticism. But if you want to write, you can outline 2 criticism as such, not more than that. And there are many criticism in the way coming towards this. Okay. That we can say. Now, question number 5 in this. It is a very straightforward question. Why need a legislative council in the state? Give the suitable argument. Simply give the argument. लेजिस्लेटिव काउंसिल क्यों चाहिए हमें, किस लिए चाहिए हमें, ठीक है, आर्टिकल क्या रिलेटेड, इसमें आर्टिकल मेंशन करना बहुत जरूरी है, तो इट्स बेटर यू मेंशन द आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल 169 है हमारे इसके लिए, 171 है हमारे लिए, ठीक है, तो यू शुड राइट 171, 169 और रिसेंट डिमांड एंड कंट्रोवर्सीज क्या एसोसिएटेड है, वर्सेस क्या एसोसिएटेड लेजिस्लेटिव काउंसिल के relation. Legislative Council of State. ठीक है, किस लिए चाहिए हमें लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट. बेसिकली ये बाई कैमरल स्टेट लेजिस्लेचर के कॉन्टेक्स्ट में bicameralism that we have in this state, ठीक है, ये उस कॉन्टेक्स्ट में. ओके, सो सिंपली यू हैव टू राइट नथिंग एज सच कि आप हमें चाहिए, खाली सिंपली हमें बताना है कि क्या प्रॉब्लम है, सिग्निफिकेंस क्या है इससे रिलेटेड. Now question number 6, what role does the executive plays in safeguarding the rights of the citizen through the fundamental rights and the DPS? Now executive roles हमें बताना है किस context में, safeguarding the rights of the citizen through the fundamental rights. So we have to, the role does executive, हमें देखना है कि एग्जीक्यूटिव क्या रोल प्ले करता है, किस कॉन्टेक्स्ट में, सेफ गार्ड करने का, किसका, सिटीजन राइट्स जो फंडामेंटल और डीपीएसपी में दोनों में. सो बेसिकली हाउ विल यू एड्रेस दिस क्वेश्चन, दैट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट. सो इन दिस यू हैव टू प्रोवाइड 2 डेफिनेशन. एक तो 2 डेफिनेशन आपको प्रोवाइड करना है, पहला रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स एंड द सेकंड डेफिनेशन रिलेटेड टू डीपीएसपी. ठीक है, इसको सिंपली आपको डिफाइन कर देना है कि दोनों का मतलब क्या है. ठीक है, इंट्रोडक्टरी पार्ट में आप क्या लिख सकते हैं इसके अंदर कि भाई स्टेट जो है उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यही है, या किसी भी ऑर्गन के एग्जिस्ट करने का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यही है कि टू सर्व द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल. ठीक है, in this case to serve the fundamental rights of the people or to serve the rights of the people. Now DPSP and fundamental right both are rights actually. DPSP भी rights है individual का, मतलब human का right है, not individual in that case. It's a right of human. And second is fundamental rights, तो उसका individual का right है. DPSP is the social rights, social and economic rights of the individual. So आपको एग्जीक्यूटिव ने क्या रोल प्ले किया इस केस में, इसको स्ट्रेंथन किया है. ठीक है, आपको उस केस में डिस्कस करना है खाली. ठीक है, एंड
4, 5 point is enough. Points is enough in this case. And what are the things that you can write in this? The role the executive plays, क्या role executive play किया होगा हमारे उसमें. So there are many schemes that has been launched. ठीक है, इसके कॉन्टेक्स्ट में पॉलिसीज है. आयुष्मान भारत अभी रिसेंटली लॉन्च किया हमने. ठीक है, फंडामेंटल राइट्स को स्ट्रेंथन करने के लिए राइट टू इक्वालिटी हमने दिया, राइट टू वोटिंग राइट मिला है, इक्वल वोटिंग राइट है सबके, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है हमारे पास में, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है हमारे पास में, राइट टू एजुकेशन है हमारे पास में. ठीक है, मैनी स्टेट्स ने डीपीएसपी में काउ लिंचिंग बैन किया है. ठीक है, तो काउ लिंचिंग नॉट बट काउ स्लॉटरिंग इज बीइंग बैन. तो वो भी एक राइट्स की तरफ मूव. एनवायरमेंट के लिए राइट प्रोवाइड किया है एग्जीक्यूटिव ने. ठीक है, even due process of law, process established by law. So you can write many things, but 5 things is more than enough. ठीक है, एंड उसमें प्रॉब्लम ये है खाली कि आप जब कंक्लूजन में लिखेंगे तो खाली ये बात कहेंगे कंक्लूजन में या आउटलाइन करेंगे इस बात को कि देयर इज अ कंट्रोवर्सी दैट इज एसोसिएटेड विद रिस्पेक्ट टू द implementation of DPSP and the fundamental rights. And the Supreme Court has provided a method of harmonious principle, because once we try to implement the DPSP, it will get violated the fundamental rights of the individual. ठीक है, तो ये आर्ग्यूमेंट आपको कंक्लूजन में लिखना पड़ेगा ताकि एग्जामिनर को मालूम हो जाए कि यू नो देयर इज अ लिटिल कंट्रोवर्सी एसोसिएटेड विद दिस आल्सो, that you should remember that. Okay, you getting my point? So this is what about the question number 6 that we have. Now question number 7, it's a very straightforward question. Simply है, आपको सिंपल लिख के आना है खाली इसके अंदर, और कोई तो मतलब एज सच कोई बहुत बड़ा एनालिटिकल आर्ग्यूमेंट भी आपको नहीं करना है. इट इज वेरी सिंपल. क्वेश्चन क्या कहता है? गवर्नर इज बोथ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट एज वेल एज रिप्रेजेंटेटिव यूनियन एट द स्टेट लेवल. ठीक है, एग्जामिन, वी हैव टू एग्जामिन दिस स्टेट. गवर्नर क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल हेड भी है और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूनियन भी है. ये डिपेंड करता है इसके वर्क, इसके फंक्शंस पे डिपेंड करेगा. ठीक है, कि कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कैसे है और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनियन इस कैसे है. तो अगर हम देखें तो इट्स, पहले तो अगर पोजीशन वैसे हम चेक करें कि कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कैसे है, तो सबसे पहली बात कि इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट. क्या है ये? कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है. कहां पे है? अंडर आर्टिकल 154 के अंदर. ठीक है, अब दूसरा इसका कॉन्स्टिट्यूशनल वर्क है अंडर आर्टिकल 164 के अंदर, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सीएम और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट करता है. ठीक है, तो ये इसका क्या है? अपॉइंट बहुत सारे और अपॉइंटमेंट करता है. एडवोकेट जनरल 165 के अंदर, 316 के अंदर अपॉइंट करता है पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स को और उसके चेयरमैन को. ठीक है, और 174 के अंदर वो समन करता है किसे? लेजिस्लेटिव असेंबली को, और उसके जो है समन भी करेगा, डिसॉल्व भी कर सकता है वो. ठीक है, प्रोरोग भी कर सकता है. तो बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज वो करता है जो उसे एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे पहुंचाता है. ठीक है, और वो स्टेट रिप्रेजेंटेटिव कैसे है विद रिस्पेक्ट टू दैट? तो बहुत सारे. उसका अपॉइंटमेंट अपने आप में क्या है? कंट्रोवर्शियल है. जैसे कि उसका अपॉइंटमेंट एक्चुअली अपॉइंटेड है, वो एक इलेक्टेड बॉडी नहीं है या इलेक्टेड इंडिविजुअल नहीं, तो सिलेक्शन होता है वहां पे. सो एक प्रॉब्लम तो ये है जो कि 155 से आता है. अब 155 165 के अंदर क्या प्रॉब्लम है कि 165 सेज दैट जो गवर्नर जो ऑफिस होल्ड कर रहा है वो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट से. इसका मतलब क्या है? प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, इसका क्या मतलब है कि ही इज इन द ऑफिस ओनली टू सर्व द इंटरेस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट. ठीक है, ये फिर इसका रोल प्रेसिडेंट रूल के लिए, इसका रोल अंडर आर्टिकल 356 के अंदर, ये भी बहुत कंट्रोवर्शियल है. ठीक है, तो ये इस केस में क्या दिखता है कि यूनियन का ये रिप्रेजेंटेटिव. अब गवर्नर से एसोसिएटेड क्रिटिसिज्म भी लिखा हुआ है. और एक बात याद रखिए कि जो टॉपिक है ना गवर्नर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके मेंस के लिए. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर मेंस. ठीक है, सो यू कैन सी सिंपली देयर इज अ क्रिटिसिज्म एसोसिएट कि जब भी गवर्नर का पोजीशन सबसे ज्यादा एक्सपर्ट कौन करता है? द पॉलिटिकल पार्टी इन पावर, वो करता है, हमेशा से कर रहा है.
उससे रिलेटेड कोई रिकमेंडेशन है तो बहुत सारे, सेकंड ARC का भी रिकमेंडेशन है, फिर पुंछी कमीशन का रिकमेंडेशन है, सरकारिया कमीशन का रिकमेंडेशन है, ठीक है। तो बहुत सारे रिकमेंडेशन ऑलरेडी हैं जो आर्टिकल 356 के बारे में कहते हैं कि इसे 355 एंड 356 को अमेंड करो सही से, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आप उसको लिख सकते हैं, ओके। नाउ इन द क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर द फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज है जो मेंशन, ये आई विल नॉट डिस्कस दिस, elaborate upon significance, तो आप यू कैन रीड द मॉडल आंसर, यू कैन गेट द आंसर डायरेक्टली, तो इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन की जरूरत ही नहीं है। हाउ विल यू स्टार्ट? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पढ़ो, ठीक है, 1976 का, उसमें स्वर्ण सिंह कमेटी की रिपोर्ट है, ठीक है, उसके थ्रू हमने आर्टिकल 51A को ऐड किया फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड, ठीक है। सो प्लीज रीड दिस, इट्स वेरी इलैबोरेटली गिवन, इनफैक्ट वो आंसर याद कर लो, अगर फंडामेंटल ड्यूटीज पे कोई क्वेश्चन आएगा, दिस इज द एक्सटेंट दैट कैन कम, तो उसे याद ही कर लो, अच्छा रहेगा, दैट इज गुड फॉर योर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, elaborate the process of election of president in India. हमें elaborate करना है किसे? The process of election of president in India. Also mention the relevant constitutional provision pertaining to the election of the president. This is a very straight and factual question. आपको सिर्फ प्रोसेस बताना है इलेक्शन का कैसा होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, ठीक है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है, ठीक है, वी डोंट फॉलो द सिंगल पास द पोस्ट सिस्टम हम फॉलो नहीं करते, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम फॉलो करते, ठीक है, ये आपको बताना। और उससे रिलेटेड क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन, कौन है इलेक्टोरल कॉलेज में, इलेक्टोरल कॉलेज का कंपोनेंट कौन बनता है, दैट यू हैव टू डिस्कस। I will not be discussing this question. It's a very straightforward question and very factual. No analysis as such required. Now, question number 10. Highlight the difference between, again, parliamentary and the presidential form. Draw like this. One is a parliament, simply, ठीक है, or presidential. Before writing this, you should describe or give the definition or explain the concept. What do you mean by presidential system? What do you mean by parliamentary system? ठीक है, ये दोनों का अपना अलग अलग क्या मतलब, ठीक है। पहले दोनों का डेफिनेशन लिख, देन यू कैन डायरेक्टली मूव, राइट 5 पॉइंट्स, ठीक है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, 5 पॉइंट इन ईच, दैट विल सफाइस आंसर, और सिंपली करना है। In this question, if you do not make the conclusion also, it's okay, completely okay. If you make the conclusion or introduction, it is, then also it's fine, not an issue. ठीक है, this is what you can do in this question. I don't think so कि आपको इसके अंदर explanation की आशीष जरूरत है, ठीक है। This is about question number 10. Now let's move to question number 11. What do you understand by constitutionalism? Now this is important. What are the basic ingredients having the constitution in any political system? Okay. Now this is the question that you have to discuss, that I will be discussing because it's an important question. Constitutionalism, often time and again it comes in the paper. Simply write the definition of constitutionalism. What do you understand by the constitution? क्या है, mechanism है, किस तरीके का mechanism, किस तरीके का, to legitimacy to the democratic. Legitimacy provided is a democracy. ठीक है, or we can say it is the mean through which we can say that who will be ruling the, or we can say the people are the eventual ruler of the, or we can say there is a limitation of power in the executive or any organ of the government, or simply we can say it is a supremacy of the constitution, that you can use whatever you want. So अगर हम देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का भी कोई डेफिनेशन प्रोवाइड किया हुआ है तो आप उसे भी लिख सकते हैं, जैसे कि एक डेफिनेशन सुप्रीम कोर्ट ने प्रोवाइड किया था रामेश्वर यादव के, सॉरी, रामेश्वर प्रसाद के केस में वर्सेस ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया, रामेश्वर प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में उसकी डेफिनेशन विद रिस्पेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रोवाइडेड। ये जो डेफिनेशन हमने अपने मॉडल आंसर में दिया है ना, ये आप लिख ले कहीं पे, याद ही कर लें उसको, सबसे बेस्ट आइडिया, ठीक है।
दैट विल बी नाउ बेसिक इंग्रेडिएंट कहाँ है, हमें जो इंग्रेडिएंट है जो कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ मूव करता है तो बहुत सारे हैं, जैसे कि रूल ऑफ लॉ है, एग्जिस्टेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट होना, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी का कॉन्सेप्ट होना, डिवीजन ऑफ पावर का होना, ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर का होना, ठीक है, देर इज अ पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी होना, पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी मतलब कि रेगुलर इलेक्शन का होना, ठीक है, कंपोनेंट ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी होना, डेमोक्रेसी, so, ये बहुत सारे एलिमेंट, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट फंडामेंटल, इसके बाद 5 6 7 आपने 250 वर्ड से तो एटलीस्ट 7 पॉइंट्स आप देखें उसके अंदर, ठीक है, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, then you can eventually write the constitution. The constitutionalism is the very important component for the good governance. आप किसी से भी लिंक कर सकते for the welfare of the people, democracy, strengthening the democracy. अब वो conclusion आपके ऊपर है कि आप कैसे उसको लिंक करना चाह रहे हैं. It is completely your prerogative how you want to link it. That is very important. So this is what I'm expecting you from this question. The component. Okay. The answer, the content of this answer. Please read the given model answer to you. It's very important. Now, question number 12, what is the judicial accountability? Simply write the definition. Judicial accountability का definition क्या है वही लिखो सबसे पहले. अगर किसी का definition दिया हुआ, सुप्रीम कोर्ट का कोई definition दिया है तो उसे सेकंड ARC में अगर कोई definition दिया है तो वो देख लो. और अगर से किसी रिपोर्ट में, गवर्नमेंट की किसी रिपोर्ट में definition दिया है तो वो पहले, जब भी ऐसे मेजर definition जैसे जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी है, जुडिशियल रिव्यू है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, ये सब का अगर तुम्हें कहीं किसी पब्लिक डॉक्यूमेंट में या सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में तुम्हें मिल जाए तो बहुत अच्छा, नहीं मिल रहा तो उसके लिए भागो मत पहली चीज, और मिल गया तो बहुत अच्छा, नहीं मिला तो कोई, ठीक है. तो दिस इज इंपॉर्टेंट. तो डेफिनेशन उसका लिखो. और देन अनदर क्वेश्चन इज स्टेप टेकन टू एंश्योर द जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी इन इंडिया. तो क्या क्या स्टेप लिया गया है ना गवर्नमेंट की तरफ से कॉन्स्टिट्यूशनली, पहले तो क्या है स्टेप लिए गए हैं टू एंश्योर द जुडिशियल. तो सबसे पहला तो ये है कि जो हमारे पास में 124 और जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी 124 जो है, सॉरी, विच एस्पेक्ट वी शुड यूज इन इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी. देखो विच एस्पेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि उसका इलेक्शन कैसे होता है, टेन्योर कैसा है, सैलरी कैसी है, उसके जजमेंट के साथ में क्या हो रहा है, कोड ऑफ कंडक्ट जो उसका वो है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, इंक्वायरी ऑफ जुडिशरी है, रिमूवल कैसा है, ये सब कंपोनेंट क्या है उसके इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का कंपोनेंट, ठीक है, जुडिशरी का कंपोनेंट. सो व्हाट आई वाज टेलिंग, सबसे पहले तो जो हमारा आर्टिकल 124 है और आर्टिकल 217 है, 124 एंड 200, 124 एंड 217 का आर्टिकल, ये हाई कोर्ट से रिलेटेड है, ये सुप्रीम कोर्ट से, जो कि रिमूवल ऑफ जजेस है जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी के लिए. रिमूवल ऑफ जजेस जो हमने असाइन कर रखा है, हाई कोर्ट के जजेस को रिमूव करने के लिए पार्लियामेंट को हमने अथॉरिटी दी, ठीक है. देन वी हैव इंक्वायरी ऑफ जजेस का जो एक्ट है हमारे पास में 1968 का, इंक्वायरी ऑफ जजेस, इंक्वायरी ऑफ जजेस एक्ट, जजेस एक्ट, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है. फिर अभी क्या नाम है, और भी क्या फ्लेक्सिबिलिटी है, जिससे कि ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है क्योंकि इसका कंटेंट आपको इकट्ठा करना पड़ता है. जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी के लिए क्या क्या किया जा सकता है, ठीक है. सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया था कि इन हाउस प्रोसीजर होना चाहिए, किसके लिए, 1999 इन हाउस प्रोसीजर किस चीज के लिए होना चाहिए, इन हाउस प्रोसीजर, ताकि कोई भी वायलेशन होता है जजेस से तो उसे क्या किया जाए, पनिश किया जा सके, उसे क्या किया जा सके, पनिश किया जा सके. ओके, वी कैन पनिश द पर्सन. फिर दूसरा, सॉरी, तो जुडिशियल चार्टर भी है हमारे पास में 1997 का, ठीक है. और डिजिटाइजेशन हमने कोर्ट की अकाउंटेबिलिटी को एनहांस करने के लिए, वही बहुत इंपॉर्टेंट है इस केस में, ठीक है. अभी हम रिसेंटली मेमोरेंडम वो लेके आ रहे हैं प्रोसीजर फॉर द अपॉइंटमेंट इवेंट, ठीक है, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस केस में.
और क्या हमें करना चाहिए, जैसे कि अभी एक रिसेंटली लोकपाल हमने बनाया। कॉलेजियन सिस्टम करंट अफेयर में चल रहा है। हाँ, कॉलेजियन सिस्टम आप कह सकते हैं कि वो तरीके से क्रिटिसिज्म ही रहा है हमारे लिए। ठीक है, कि कॉलेजियन सिस्टम को हटा के हमें कुछ और मॉडल लाना चाहिए, पर हमने लाया भी था एनजेएसी एक्ट। ठीक है, एनजेएसी लाने की हमने कोशिश की थी, लेकिन इट वॉज डाई डाउन। ठीक है, तो उसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड एआरसी का कुछ रिकमेंडेशन है, तो उसे देखो, नेशनल जुडिशियल काउंसिल बनाने की बात करी गई थी। तो कोड ऑफ कंडक्ट जो जजेस के लिए होना चाहिए, कोड ऑफ कंडक्ट, लोकपाल जो स्वीडन की तरह है या किसी और कंट्री की तरह, हमें लोकपाल भी अडॉप्ट करना चाहिए। ठीक है, एक प्रॉपर लोकपाल जो है हमारे पास, स्ट्रॉन्ग लोकपाल, नॉट लाइक राइट नाउ जो भी हमारे पास में लोकपाल, इट्स नॉट वर्किंग प्रॉपर। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं इस केस में, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, इसका मॉडल आंसर एक बार पढ़ो और देखो कि कैसा लिखा है उसमें। एंड दिस इज द गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 को कंपेयर करना है हमें सिंपली इंडिया के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क दैट द यूएस विद दैट ऑफ यूएस वाइस प्रेसिडेंट के रिस्पेक्ट में। सिंपल है कि इनका इलेक्शन देखो कैसा होता है। ठीक है, इनका टेन्योर देखो कैसा होता है। ठीक है, uh, जो टेन्योर है वो कैसा होता है, अगर अगर से ऑफिस वेकेंट हो गई तो दोनों के केस में क्या है। तो बेसिकली आप दो फेज में इसको लग सकते, कंपेयर करना है। द वर्ड कंपेयर हैज बीन यूज्ड, यू शुड राइट सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज। सिमिलैरिटीज, ये दो चीजें आपको देखनी है इसके अंदर, क्या सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज क्या क्या है। ठीक है, तो टेन्योर के, ऑफिस के पोजीशन को लेकर के कि क्या क्या, और वहां का जैसे ऑफिस का पोजीशन अलग है, यहाँ पे अलग है। वहां पे आ, जो है न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं हो पाती है, सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है वाइस प्रेसिडेंट के साथ। यहाँ पे मेंटेन हो जाती है कुछ हद तक के। सिमिलैरिटीज क्या है कि दोनों अपर हाउस, वहाँ सेनेट का वो चेयरमैन होता है, यहाँ पे राज्यसभा का चेयरमैन होता है, दोनों अपर हाउस चेयरमैन। सो यू कैन रीड एंड यू कैन राइट कंपेयर, कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है ये। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 14, डू यू एग्री? सो वी डोंट हैव टू राइट मच ऑन दिस, आई विल नॉट डिस्कस, इट्स a straightforward question, so you can write it down, no issue. Question number 14, do you agree that Indian constitution scheme? सर इसका कंक्लूजन कैसे करें, किसका, प्रेसिडेंट वाले क्वेश्चन का? यू टॉकिंग अबाउट प्रेसिडेंट, क्वेश्चन ऑन द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। ओके, वाइस प्रेसिडेंट का सिंपल है, वी हैव टेकन मोर ऑफ ए प्रैक्टिकलिटी। ठीक है, एंड वी हैव केप्ट द पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट सॉरी, वी हैव द केप्ट द पोजीशन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट as a you can say neutral, as much as neutrality that we have able to maintain in that. ठीक है, जितना न्यूट्रल बना सकते थे हमने उतना न्यूट्रल बनाने की कोशिश किया है। वी हैव नॉट paid much emphasis on the powers of the president as such, but we have emphasized on its role and the responsibilities more. ठीक है, वो थोड़ा सा हमने उस पर ध्यान ज्यादा दिया। ओके, तो बेसिकली एक हमने, हमारा जो मेजर फोकस है वो कॉन्टिन्यूटी ऑफ पॉलिटी के लिए हमने उसे किया है, एक सिस्टम की कॉन्टिन्यूटी के लिए हमने उसे बनाया है। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है समझ रहे हैं। ठीक, तो कंक्लूजन आप ऐसे लिख सकते हैं, वहां पे जो पोजीशन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट है वो पावरफुल पोजीशन है एक्चुअली। ठीक है, हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि इलेक्शन हो गया था, वहां चूज कर लिया जाता है, सबसे बड़ा इशू। तो वहां पे जो चूज होता है तो जनरली उसी पॉलिटिकल पार्टी के प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट चूज करते हैं। डू यू एग्री दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, do you agree, question number 14, do you agree the Indian constitution scheme provides separation of power? Then various organs, justify your answer. It's a very easy question, very easy, very easy question. तो पूरे क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, आपको सेपरेशन ऑफ पावर का डेफिनेशन लिखना है और सिंपली उसके बाद में आपको कहाँ मूव कर जाना है, आपको यहाँ मूव कर जाना है कि कौन कौन सा प्रोविजन है जो सेपरेशन ऑफ पावर हमारे वेरियस ऑर्गन के लिए बात करता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आर्टिकल 50 ही बात करता है डीपीएसपी के अंदर, आर्टिकल 50 सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में बता रहा है। फिर उसके बाद 53, 154 भी बात करता है इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट के बारे में, पोजीशन ऑफ द गवर्नर के बारे में। 121, 122 भी बात करता है जिसमें लेजिस्लेचर और सॉरी
जो भी लेजिस्लेचर का जो कंडक्ट, जुडिशरी का जो कंडक्ट है, वो आप हाउस में, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का, आप चाहे वो स्टेट लेजिस्लेचर हो, चाहे वो जो है सेंट्रल लेजिस्लेटर हो या पार्लियामेंट, तो आप वहाँ डिस्कस नहीं करते, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का प्रोसीजर। ठीक है। ऑर्डिनेंस प्रोमुलगेट करने का भी पावर है उसके पास भी, ठीक है, 123 के अंदर, ऐसे बहुत सारे प्रोविजन। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन के इसमें सेपरेशन ऑफ पावर में अगर हम देखेंगे तो बहुत स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है, ठीक है, जो कि वाटर टाइट सेपरेशन ऑफ पावर में हमने बिलीव नहीं किया। हमने कहाँ बिलीव किया है मेजरली? म्यूचुअल डिपेंडेंसी में हमने ज्यादा बिलीव किया, चेक एंड बैलेंस का हमारा अप्रोच बहुत ज्यादा है। तो जो मॉन्टेस्क्यू जिसकी बात कर रहा है, जिस सेपरेशन ऑफ पावर की द मॉन्टेस्क्यू वाज टॉकिंग अबाउट, वी आर नॉट फॉलोइंग दैट सेपरेशन ऑफ पावर, वी आर एक्चुअली फॉलोइंग द our Indian version of separation of power that has been suited to our, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज। और इवन अराउंड द वर्ल्ड, कंक्लूजन आप लिख सकते हैं कि अराउंड द वर्ल्ड जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम या बन रहे हैं या बनते हैं, ठीक है, वहां पे वहां के कंट्री के सुटेबिलिटी पे चीजों को चेंज किया, कॉन्सेप्ट को बदला जाता है। ठीक है। अमेरिका में एज सच कोई सुटेबिलिटी की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो अपने आप में एक रिफॉर्म कर रहा था, पहला कोई कंट्री था जो एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की कोशिश कर रहा था। ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट उसने बना ले गया, और बाद में ओवर टाइम पॉलिटिकल मेच्योरिटी भी उसी लाइन ऑफ थॉट पे आ गई। ठीक है। तो आज अगर अमेरिका को चेंज करना पड़े तो आज बहुत डिफिकल्ट हो जाए, अमेरिका फंक्शन ना कर पाए। ठीक है। दैट इज वन, सो यू कैन सिंपली राइट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने एम्ब्रेस किया है सेपरेशन ऑफ पावर को, अनडाउटेडली किया, लेकिन जो सेपरेशन ऑफ पावर को हमने एम्ब्रेस किया वो बहुत डिफरेंट है कंपेरेटिव। ठीक है। राइट। नाउ व्हाट आर द एंटी डिफेक्शन, क्वेश्चन नंबर 15 वी आर टॉकिंग अबाउट एंटी डिफेक्शन लॉ, डिस्कस, right? And what is anti-defection law? What is anti-defection? First, you write what. Don't write defection. What is right? What is anti-defection? Okay. Simply provide a definition to this. Discuss 42nd Constitutional Amendment Act. Then discuss 91 Constitutional Amendment Act of 2003. ठीक है, ये 1985 का है, इसे दोनों को डिस्कस करें। ठीक है। Then you write, you can make an opening statement, जो वेरी फेमस केस है जो आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, आया राम गया राम। You can use this which happened in 1967, जो हरियाणा के हमारे एमएलए साहब, एक ही दिन में 2-3 पार्टियां बदल लिया था उन्होंने, कुछ भी हो रहा था वहाँ। अब इसमें हमें लिखना क्या है? सेकंड में लिस्ट ऑफ द मेजर प्रोविजन पर्टेनिंग टू द एंटी डिफेक्शन। अब प्रोविजन की हमें बात करनी है, जो प्रोविजन जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एज सच दिए हुए, तो इट्स अंडर आर्टिकल, सॉरी अंडर शेड्यूल 10 में है, 10 में है, 9 में, विच शेड्यूल? इट इज इन विच शेड्यूल? एंटी डिफेक्शन लॉ, इट्स इन 10 शेड्यूल। ओके, गुड, Yasir Iqbal, good one. Okay. Now, what do you have to write in this anti-defection law? You will need no criticism here because it's a controversial topic. ये बहुत ही controversial क्या, बहुत ही डिबेटेड टॉपिक है। ठीक है। एंटी डिफेक्शन लॉ एक बहुत डिबेटेड टॉपिक है, हमेशा इशू में रहता है इंडिया में। ठीक है। जब से 2003 में जो अमेंडमेंट हुआ है कि 2/3 अगर से 1/3 चाहे तो वो अलग हो सकते हैं 2/3 से, तब से तो बहुत बुरा हाल हो गया। महाराष्ट्र में सरकार गिरा दी गई, गोवा में सरकार गिरा दी गई, वहां नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में सरकार को गिरा दिया गया बिकॉज बाय बीजेपी। यहाँ पे एमपी में सरकार को गिरा दिया गया। ठीक है, एंटी डिफेक्शन केस, तो वो हो सकता है हो जाए। हरियाणा कर्नाटक में सरकार को गिरा दिया गया एंटी डिफेक्शन के चक्कर। इट्स अ वेरी controversial issues in India. It's strict. We are not able to have a maturity in this. That is important. Question number 60. Elaborate a discretionary power enjoyed by the governor. Again, we have taken the governor. Discretionary power क्या enjoy करते हैं? You have to elaborate. That is, first you have to list out, then you have to explain that. Explain that topic.
Also comment upon the rationale behind the discretionary. Rationale behind the discretionary. क्या rationale है वो discretionary power? ठीक है, ये discretionary power देने का क्या मतलब है? ठीक है, so you will write the discretionary. पहले तो constitutional discretion क्या क्या है उसके पास में, ठीक है, then you can write the situational discretions क्या क्या है उसके पास में. Situational discretion क्या है? अब ये discretional के लिए rationality क्या है, ये reasons क्या है, ये rationale क्या है इस discretion के. फिर उसके बाद में क्या गवर्नर के डिस्क्रिप्शन पावर को लेकर के कोई क्रिटिसिज्म है या नहीं है, ठीक है. एंड इफ देयर इज अ क्रिटिसिज्म देयर हैज टू बी अ वे फॉरवर्ड. यू हैव टू मेंशन द वे. सो यू कैन राइट अ क्रिटिसिज्म इन हियर एटलीस्ट 3 से 4 क्रिटिसिज्म लिखो, 2 वे फॉरवर्ड लिखो. इसके बाद किसी कमेटी का कोई रिकमेंडेशन है या नहीं है इस केस में, और डेफिनेटली होगा. पुंछी कमीशन का रिकमेंडेशन, सेकंड एआरसी का रिकमेंडेशन, वी फाइंड आउट. दैट इज योर जॉब. इन दिस वे यू विल कंप्लीट द answer and you will eventually conclude it. Okay? We cannot outline everything in the form of law. Okay? So we have to keep certain discretionary power with the executive in the with which he or she can use with time to time. But the point is in here is the discretionary power should be used with the morality and with the sense of law. Okay? Unnecessarily से use करने की जरूरत नहीं. ठीक है? Getting my point? So this you should be discussing. And those who are our polity students, these questions will come. Again, we will be discussing this topic. Sanjay sir will discuss this topic with respect to the governor, and I might be discussing some part in the governance also. Okay. But Sanjay sir will be discussing this topic very elaborately. Those who are IQRA students and those who are outside IQRA, so this is how you have to. And the topic of governor is very important for exam point. Either you're talking about prelims. In prelims, you might get a question, but it is very important topic for mains. Every second, third year, I get a question for the related to with respect to the governance, the governor power. गवर्नर में कुछ भी पूछ लेंगे. हमने अपने पेपर इसी पेपर में दो चीजें पूछा गवर्नर. ठीक, प्लीज रिमेंबर दिस. Now question number 16, list out the major tools at the disposal with the parliament through which hold the executive responsibility. This is straightforward factual question. In fact, is written in your NCERT. ये इसका सीधा सीधा आंसर आपके NCERT में लिखा है. कॉन्स्टिट्यूशनल एट वर्क के चैप्टर में, बुक में, कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क बुक, एक एग्जीक्यूटिव का चैप्टर है. एग्जीक्यूटिव का चैप्टर है, मेरे ख्याल से चैप्टर 4 है वो, एक बार चेक कर ली. ये वहीं पे लिखा हुआ, पूरा आंसर ही लिखा. Students, 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 am I visible to you? Am I audible? Okay. Visible, not great. The light, electricity is gone at my place. Okay. So there is no electricity as such right now. So we are really sorry for this. Let me check 1 minute.
So we are really sorry for this inconvenience. So थोड़ा सा डार्क है, बट आई थिंक कि वीडियो को बंद कर देना ज्यादा ठीक रहेगा. ऑडिबल तो है ना आप लोग? इज इट ऑडिबल टू यू? ओके. So I'll just disconnect the audio video and just talk on the audio because only 2 questions are left so far. ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में मैंने आपको बता दिया. इट्स डायरेक्टली रिटन, सो आई डोंट थिंक आई नीड टू एक्सप्लेन इट अ लॉट. आप वहां से भी कर सकते हैं. एक क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट इज द क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स. सबसे पहले तो इसका डेफिनेशन चाहिए. क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स होता क्या है? सबसे पहले स्टार्ट योर आंसर बाय प्रोवाइडिंग सम डेटा विद रिस्पेक्ट टू द क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स. तो जैसे कि हमारे मॉडल आंसर में डेटा होगा, एडीआर की रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है. एडीआर, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म. ठीक है. एडीआर की रिपोर्ट के हिसाब से अगर हम देखें तो बहुत सारे क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हैं. ठीक है. 2014 में जो 14 का इलेक्शन है उसमें करीब करीब 187 लोग हैं जो जिसका क्रिमिनल बैकग्राउंड है. ठीक है. क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स का सिंपली मीनिंग है कि बैकग्राउंड जो है पॉलिटिशियन का वो क्रिमिनल है. दैट मीन्स दे आर फेसिंग 1 और 2 एज अ क्या कहते हैं उसे, क्रिमिनल चार्जेस हैं उनके ऊपर. ठीक है. तो ये थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट है आपके अंडरस्टैंड करने के लिए कि यहाँ पे ऐसा सिचुएशन अराइज होता है. ठीक है. कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हो गया है उनका. अब इसमें एक सबसे बड़ा जो एक पॉइंट आता है इसके अंदर कि अगर जो सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है एंड स्पेशली 2014 के लिए था कि इतने सारे लोग अगर क्रिमिनल बैकग्राउंड के आ रहे हैं तो हाउ विल यू एंश्योर दैट दिस देयर विल बी अ प्रॉपर और इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर. लॉ एंड ऑर्डर का इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो सकता है? नाउ दैट इज अ ग्रेट क्वेश्चन एज सच, व्हाट आई थिंक, because it's not possible. So that was a good criticism as such. Now according to the question what we have to do, हमें simply criminalization of politics बताना है. और बताना ये है कि representation of people acts 1951 criminalization of politics को कैसे कम करता है. So अगर आपके अंदर आपको याद है कि एक टॉपिक है आपके इसमें आरपीए एक्ट को, सॉरी, आरपीए एक्ट को पढ़ने के लिए बोला है सिलेबस में. ठीक है. उसी के हिसाब से हमने ये क्वेश्चंस बनाए. ठीक है. कन्विक्शंस होना चाहिए कैसे कैसे जो है सेक्शन 10 टॉक अबाउट डिस्क्लोजर ऑफ द इलेक्शन एक्सपेंसेस होता है तो क्रिमिनलाइजेशन कैसे होता है. कोई रिसेंट अगर इनिशिएटिव लिया गया है क्रिमिनलाइजेशन को हटाने के लिए या क्रिमिनलाइजेशन को कम करने के लिए. सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में ऑर्डर पास किया पॉलिटिकल पार्टी टू पब्लिश द एंटायर क्रिमिनल हिस्ट्री ऑफ द कैंडिडेट, तो लोकसभा और या फिर जो है असेंबली इलेक्शन के लिए हो. पब्लिक इंटरेस्ट में एससी ने सीन पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन है, पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 का जो केस है उसके अंदर भी गवर्नमेंट एससी ने डायरेक्ट किया पॉलिटिकल पार्टीज को कि आप जितने भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है कैंडिडेट के रिस्पेक्ट में आप उसे पब्लिश करें. ठीक है. एंड दैट इज इंपॉर्टेंट. ओके. सो प्लीज रीड दिस टॉपिक. दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. Okay. That's the reason I have deliberately incorporated this topic in my test paper, so that one more thing I'll tell you that I have only included those topic in my test paper which I think that this is the important topic. So do not, if I'm not able to write that topic, then also go and read about the topic. It will get you better idea. Okay. Now question number 19, 73 and 74 Constitutional Amendment Act usher a new era in the Indian politics. 73-74 के बारे में बताना है. इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में एक नया एरा स्टार्ट किया. वी ऑल नो दैट एरा स्टार्टेड एज अ डिसेंट्रलाइजेशन का एरा स्टार्ट होता है और वो भी कॉन्स्टिट्यूशनली स्टार्ट होता है. ठीक है. कैसे स्टार्ट होता है? कॉन्स्टिट्यूशनली. तो आप उसके बारे में लिखेंगे कि क्या है, कब हुआ, 1993 में. ठीक है. इसे इम्प्लीमेंट किया गया और क्या क्या एडेड हुआ है इसके वजह से. कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या क्या हुआ बहुत ब्रीफली. 73-74 के बाद में क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, क्या क्या चीजें ऐड हुई कॉन्स्टिट्यूशन में, आप बहुत ब्रीफली लिखेंगे उसके बारे में. ठीक है. अब उससे इससे फायदा क्या होगा? न्यू एरा बोल रहा है तो वी आर लुकिंग फॉर द बेनिफिट्स. व्हाट बेनिफिट हैज बीन इनकॉर्पोरेट, लाइक वुमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ा बहुत ज्यादा. ठीक है. वुमेन पार्टिसिपेशन बढ़ा. दलित्स का या लोअर कास्ट का, शेड्यूल कास्ट का पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बढ़ गया. ग्रास रूट डेमोक्रेसी स्टार्ट होता है.
रेगुलरिटी इन पंचायती इलेक्शन आता है, डायरेक्ट इलेक्शन का होता है, ठीक है, बेटर मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज होता है, बेटर मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है, ठीक है। तो बहुत सारे डेवलपमेंट में इफ यू राइट 5 to 6 डेवलपमेंट दैट इज मोर देन एनफ, ठीक है। आप उसे लिखिए, आप उसे फंड, आप उसे वो करिए, ठीक है। अब जैसे कि ये बोल दिया उन्होंने, लेकिन दे आर आस्किंग यू कमेंट, सो यू हैव टू टॉक अबाउट द क्रिटिसिज्म और व्हाट आर द शॉर्टकमिंग्स, बेटर टू राइट द शॉर्टकमिंग्स, ठीक है। शॉर्टकमिंग्स क्या क्या है विद रिस्पेक्ट टू दिस, ठीक है। तो क्या क्या शॉर्टकमिंग्स है, बहुत सारे शॉर्टकमिंग्स। डेवोल्यूशन ऑफ फंड सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है, अगर आपको याद हो। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है इनका, ठीक है, स्टेट पैसा ही नहीं देता है इनको, इनके पास में डेवोल्यूशन का बहुत बड़ा इशू है। दूसरा, इनकी पॉलिसी मेकिंग की जो पावर है बहुत कम है। वी सी देर इज अ यू कैन से we also see there is an exist use of caste system, ठीक है, क्लास सिस्टम और जेंडर हायरार्की भी है यहाँ पे, ठीक है, बहुत कम है। पंचायत पति का कॉन्सेप्ट हमने देखा यहाँ पे, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, द कॉन्सेप्ट ऑफ पंचायत पति। आई कैन यू कैन सी मी, ओके, light has came back, so you can write this. Then if there is a problem, there has to be a way forward also, or whenever you are writing the polity answer, please go with the way forward also. सेकंड, एआरसी ने कुछ रिकमेंडेशन दिया होगा, ऊंची कमीशन ने कुछ रिकमेंडेशन दिया होगा, सरकारी कमीशन ने कुछ रिकमेंडेशन दिया, ठीक है। तो आप इसे जरूर पढ़ें, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, यू हैव टू रीड दिस। थोड़ा थोड़ा आप देखिए कि क्या कहाँ पे ऐसे हैं पॉलिटी के आंसर्स में। ट्राई टू इनकॉर्पोरेट एज मच एज द रिपोर्ट्स ऑफ द कमीशंस, नीति आयोग का हो, प्लानिंग कमीशन का पुराना हो, और किसी जैसे सेकेंड बहुत नोवेल अगर कोई एनजीओ है, जैसे एडीआर है, बहुत नोवेल है, ठीक है, यूएन का कोई रिपोर्ट है, डब्ल्यूटीओ का कोई रिपोर्ट है, तो उसे आप कोट कर सकते हैं, देयर इज नो, ठीक है, गेटिंग। सो दिस वाज अबाउट द क्वेश्चन नंबर 19 and let's talk about the last question, that is question number 20. What do you understand by the liberty, equality and fraternity? तीनों का डेफिनेशन चाहिए, डेफिनेशन टू ऑल द थ्री, डेफिनेशन प्रोवाइड करो, और ओपनिंग कैसे करोगे कि वी कैन फाइंड ऑल द एक्सप्रेशन ऑफ दिस इन द प्रियाम्बल, ठीक है, मेंशन कर दिया। नाउ यू हैव टू राइट वन बाय वन तीनों क्या है, ठीक है, लिबर्टी का क्या मतलब रहता है। पहले आप लिबर्टी लिखोगे तो उसके बारे में लिखोगे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ कहाँ आप लिबर्टी, किस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन या आर्टिकल में आप लिबर्टी लिखते हो, ठीक है, पहला। इक्वालिटी है तो उसे कहाँ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन में आर्टिकल में देखते हैं, जैसे कि आर्टिकल 14 में देखते हैं। लिबर्टी को हम 21 में भी देखते हैं, 19 में भी देखते हैं, 22 में भी देखते हैं, ठीक है। फ्रेटर्निटी हम किस कहाँ देखते हैं, फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी जनरली हमें कहाँ देखने को मिलता है, इन फंडामेंटल ड्यूटीज, फ्रेटर्निटी, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल्स। तो अब तीनों जगह को देखा करके फिर अभी जो इसमें एक तुम्हें एक चीज डालनी चाहिए, शॉर्ट कमिंग्स क्या क्या है फ्रेटर्निटी और इन तीनों को लेकर, कि आर वी एबल टू अचीव दिस particular thing in the reality or not. So there is a shortcoming because all this thing is related to the awareness and education, awareness and education. So वो दोनों अभी भी बहुत कम है, ठीक है, अवेयरनेस और एजुकेशन दोनों भी कम। एक सबसे बड़ा ये प्रॉब्लम, रूरल और अर्बन इंडिया का सबसे ज्यादा जो डिजिटल डिवाइड है, एजुकेशनल डिवाइड है, कॉन्स्टिट्यूशनली जो है उनको पावर है, लेकिन दे आर नॉट अवेयर अबाउट दैट पावर्स, सो दे आर नॉट एबल टू एक्सरसाइज। तो रूरल इंडिया में कैसी लाइफ है, रूरल इंडिया इज लाइक अ भारत, मोर ऑफ अ पेट्रियार्कल, मोर ऑफ दिस थिंग। तो एक्चुअल जो रियलाइजेशन है या जो हमने विजन किया हमारे प्रियाम्बल से, वो हम अचीव नहीं कर पाए। सो दिस इज वन ऑफ द मेजर इशू दैट इज एसोसिएटेड टू इट। So we have, I think we have completed all the 20 questions in this, in our second test. Now third test, some test will be taken by me and some test will be taken by the subject experts discussion, okay, like
Economy might be taken by some sir who is expert in the economy and that area. So he will be also explaining you. So my request will to all this first test का कब था? इल्मा first test का हो गया, बहुत पहले हो गया है. And from here we will be try to maintain its regular. हम अभी बहुत जल्दी सेकंड हो गया आज, थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ बहुत जल्दी करेंगे. ठीक है, ये एक वीक के या एक वीक या 10 days के हम उसे कंप्लीट करेंगे 7 तक के. 8 से आपको जो 9 से आपको अगला टेस्ट होने से पहले डिस्कशन हो जाए टेस्ट. ठीक है, दैट इज इम्पोर्टेंट. तो वो भी हम ट्राई करेंगे कि उसे भी हम जल्दी से जल्दी वाइंड अप कर दें. इन these days we were little busy and occupied, so डिस्कशन नहीं हो रहा. लेकिन अभी हम कुछ और मैन पावर रिसोर्स ऐड करते हैं इसके अंदर ताकि इसे और इफेक्टिव बनाया जाए. ठीक है, ताकि स्टूडेंट को वेट ना करना पड़े. एंड सो फार आई सी द copies are being evaluated on time so far and it is delivered. Okay. So from here I'll take a leave. Thank you very much. You can visit our website and you can see how we are actually performing. You can see that what are the new updates, that is that with respect to the mains test series, prelim test series, ESIR optional and that. Okay, so thank you very much. I will see you soon. Thank you with the third or fourth test. The date will be announced to you shortly. Those who are our mains test series student, the date to them will be announced in the specific group. We are making a specific group for you people and that date will be announced. Okay. Thank you very much. Thank you. Take care. Take care. Good night. Take care. Thank you, sir. Thank you to all students for joining us today and students who have joined us on other platforms.